में है पावर को लोगों ने कोचिंग के स्कॉलर्स में छोड़ा है या तो किलफील्ड पढ़ने के लिए या मतलब ऑब्वियसली फाइट होगी तो इनिशिएट होगा तो उसको आवाज आ जाएगी गन फाइट की गोली होगी और किलफील्ड भी पढ़ के मे भी वो थर्ड पार्टी करने का ट्राई कर सकते हैं बट अभी तक उनको प्रॉपर फाइट इनिशिएट किए नहीं है अभी तक पूरा इनिशिएट करे नहीं हुआ देखते होगा कि पहला जोन अब मेन चीज ये है कि हार्डशिप के नीचे ब्रिज की तरफ ना चले जाए जहां तक मेरे को लग रहा है जोन का नहीं मालूम जहां पे 100 में का नाम दिख रहा ना तो गॉडल 100 में लिखा हुआ वो क्वेरी वाले हिल के साइड ही ये जोन यूजुअली एंड होता मतलब अगर मेरा कर्सर दिख रहा नहीं दिख रहा आई डोंट नो बट 100 में जहां पे है ना क्वेरी के साइड एक सर्कल बनाओ 100 में के नीचे क्वेरी के साइड सर्कल बनाओ वहां पे यूजुअली ये जोन एंड अप होता अगर गया हार्ड शिफ्ट तो ये आईएनडी हिल पे हार्ड शिफ्ट होगा ब्रिज के ये साइड नीचे आना तो मुझे पॉसिबल नहीं लगा बाकी गणपति ओप्पा हो रहा है लेट्स गो क्रूशियल मैच पहला मैच दोनों टीम के लिए थोड़ा डिसेंट गया डिसेंट भी नहीं ओके ही गया ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है वी आर अप्रोचिंग आईएनडी हिल ओके मान्या की प्रेडिक्शन है कि आईएनडी हिल जोन आ सकता है मान्या सीधा आईएनडी हिल के लिए अप्रोच कर रहा है अपन 4 मैन प्रॉपर आईएनडी हिल होल्ड कर रहे हैं नीचे वाला कंपाउंड ऑब्वियसली खाली है 40 हिल से छोड़ के 40 पंप और फेरी लूट squads that were forced to play survival stage, you've had to consistently keep grinding and keep that force on the go. Yeah, exactly. You come out from your group in those top team spots. अरे तुमको मैप दिख नहीं रहा था ना मैं तब से बकबक कर रहा हूँ मैप नहीं दिख रहा है मैप देख के बता रहा था मैं मेन फीड देख ही नहीं रहा था सिर्फ मैप देख रहा था वाह मेन फीड में क्या हो रहा था मेरे को ध्यान ही नहीं है मैं सिर्फ मैप की फीड देख के बकबक कर रहा था वाह आ जाओ नहीं ये सेटअप है यार समझो यार I know the floor is trembling under my feet, so it'll be the same down there on the stage for our players. And if you're trying to instantly snap back into that tournament-winning mindset after a few days off with all this going on, it might take a game to try and lock back in. Yeah. I don't like that though, from Aurora. Because you can scout that a lot easier just by sending over towards the beachhead, having a look over towards Lighthouse and being like, okay, there's a guy up there waiting. Try and check the girders. I always think it's an odd maneuver to try and just send someone, slingshot them across, and it's like, well, we know there's someone across there though, but you also just lost a player. बाकी इंडिया का फ्लैग चैट में आन दो पब्लिक गणपति अप्पा मोरे लेट्स गो Could have even just waited for zone 2. इंडियन फ्लैग चैट में स्पैम मारो हार्ट्स आन दो चैट में ज्वेल्स भेजते रहो मैं चैट पढ़ नहीं पा रहा तो इसके लिए आप ज्वेल्स भेजते रहो कीप ऑन सेंडिंग ज्वेल्स जूल्स That's not what that is. जूल्स भेजते रहो Yeah, the trade of it. One player's life, one of your squad mates for an information play. Economically, it's not the best trade on it. Especially if we see him get a good run out of this game. Goes down to an awkward fight. One player of difference, Blank. Hell, I mean, even this circle right now, where it's down towards the eastern side, Fourth Wives knows that. This is prime time to go for bridge camps. Yeah. Like, if this circle is further over towards the northwest, maybe you don't go for that type of thing. But I think this one, if you're Aurora, it shouldn't be a case of, oh, let's check it through some of there. You should just know. Devil's in the details. And it paints a very pretty picture here for some teams. For Aurora, it results in 3 players alive in game 2 to kick us off. Flash also having 1 player knocked here. Oh my god, public तो आईएनडी पे क्या रे जोन still in play. There you go, buddy. आईएनडी हिल की तरफ भी गया तो जोन पूरा फेरी वगैरह बहुत नीचे का शिफ्ट मारा रे मॉडल की रोटेशन देखो आईएनडी हिल के वाला जो पास वाला कंपाउंड है वो ले रहे या तो सीधा जो मिलिट्री एरिया होता है कैंप साइट होती है वो अप्रोच करें Because now this really could go back over towards North Kuwait. I'm sort of expecting it to head towards the northwest, but for Aurora, they're stuck now. As are Alula. Alula's kind of considering whether we should take an eastern crossing or should we just play over towards the ridge side on the southern edge. It cuts out a massive amount of space though. So much water involved. But teams are just going to be sending towards Ferry Pier because there's safety in that location.
Vitality did thunderfoot their way down from Stolber quite quickly, so you can see there amongst the rest of the pack, everyone else attempting to forge a path into the zone. बॉर्डर वाले क्या प्यारी जगह ले रहे हैं, क्या प्यारी जगह ली है पब्लिक। जो मैं बोला ना मिलिट्री का एक छोटा सा कैंप एरिया होता है वहाँ पे, वही जगह अपन होल्ड कर रहे हैं, बहुत प्यारी जगह है। ओजी की रोटेशन की बात करूँ तो मैप फीड बाद में दिखाता हूँ। ओजीबी आ गई फेरी के पास, ओजीबी सीधा डब्ल्यू रोटेशन मार दी पब्लिक। अरे रे बिस्कॉट आराम से प्लीज गिरना मत, बिस्कॉट प्लीज प्लीज ओह माय गॉड प्लीज Luckily still alive. Yeah, great zigzag. और टियाना की बंदे ने स्लैम कर दिया AK, very close to going down. AK will be actually challenging this, but man, AK has been making a name for the DBS, right? You know, there's a lot of nerfs that came through. S12K became the more popularized weapon. Despite that, though, A-King has been consistently winning these crates with it. He's bringing it back in fashion. Seems like the horror fans enjoying this one so far, getting quite loud there. You see the banner flying. Haru. Oh, going back in. Let's see what he can do with a DBS. What's to prove he's the DB best up close and personal onto Schwetz. अरे यार बाजी ने कनेक्ट किया था यार। Ideal for his teammates. Joker strikes with a shotgun and Tony K outside twists the knife. Another one falls. Aru मारेगा। It all goes down to just Aru. Trapped behind the bike sheds and laid out by Arena. बहुत खराब गया। Arena खराब to remove them. Stepped up to the plate, but not worthy to sit around here with the Arena, unfortunately. Some good shots at the start there, but had to crumble slightly. Tony K came in like a demon, though, from the sidelines. Big WizGod was not expecting him to be so up close and personal. Aura played back here. They're over towards the pier itself. Four Thrives mirroring them over towards the eastern side. We are close towards our next circle now. Nigma Galaxy making me laugh at the moment, man. They're like, this circle looks horrendous. We're going to play in our drop spot for the rest of the game. We're going to get very limited before we think about moving. And we're still on Sosnovka with this one. Four Thrives looking good. Down towards the southern edge here. Vitality confirm over towards that compound that sits towards the field. I don't think that's a bad idea here. Gives you a lot of control of the Longwoods that sits around this area. Old ferry वाले दो compound पे अपन टैंक वाले एरिया टियाना के बंदे को मारा अपन डब्ल्यू नॉक फिनिश कर दिया। अपना भी एक नॉक हुआ, मिलू को नॉक फिनिश डाल दिया अपन, मिलू को नॉक फिनिश डाल दिया गॉडल के पुटे। अपना भी एक नॉक है, अपन एंगेज कर रहे हैं। टियाना प्रॉपर एंगेज कर दी। अरे यार QZZ with a nade into the ditch. Manya very low, but backpedals into safety with cover to play with. मैं फिर से मैप की फीड लगा के बैठा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये सेटअप मेरे लिए थोड़ा एडवांस है पब्लिक, थोड़ा समझ रहा हूँ, ठीक है? माफी चाहता हूँ। बाकी फाइट पे ध्यान देता हूँ। Takes a fair bit of damage here. Refusing to move. Manya will reinforce the front gates. टियाना फॉल बैक करने का ट्राई करेगी शायद। एक की पोजीशनिंग पिन है तो नेड वेट डाल के निकाल सकते हैं। दोनों को नेड वेट डाल के निकाल सकते हैं। फॉल बैक कर रहे, W they are falling back. W defend boys. पावर ने किल निकाला W. खतरनाक trying to take some space back. Faint smoke wall goes up. Only gets worse for Aurora as well. That's quick from Alula finding them. This was the other team that was on the island. There's now a third. अभी 99% पब्लिक मैंने सेटअप एकदम परफेक्ट कर दिया। मेरे माइक पे मैंने सप्रेशन ऐड कर दिया, तो आपको मेरे माइक से बैकग्राउंड आवाज नहीं आएगा। मीनो मार उसको। मीनो तो मैं ये बोल रहा हूँ 99% सेटअप एकदम परफेक्ट। अभी माइक की आवाज मैंने एकदम बराबर कर दी, अपनी सप्रेशन ऐड किया है, तो मेरे माइक से आपको बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगा, मेरी आवाज। बाकी कास्टर की आवाज भी बढ़ा दी मैंने, और आपको गेम की आवाज भी प्रॉपर आ रही है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड आई गेस। अगर सब सॉर्टेड है तो मेरे लिए चैट में 18 नंबर लिखना, उससे मैं समझ जाऊंगा कि सब सॉर्टेड है। 18 नंबर लिखना, 18
ठीक है, इससे मैं समझ जाऊंगा। बाकी अभी गेम पे ध्यान देता हूँ। मेरे को दुनिया भर के कैंप फीड है इधर, बट अभी मैं समझ गया कौन सी फीड कब दिखाना है। मेरे को इजी हो गया, मैं सब तुमको प्रॉपर दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अब A to Z हम कंप्लीटली लॉग्ड इन। अभी ये मैच से लेके आखिरी के मैच तक आपको कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी, सब 10 on 10 है। मेरे सामने XLR का डॉग, स्ट्रीम डेक, ये सारी चीजें वो सीख गया, मैं समझ गया। तो 18 नंबर स्पैम करके मेरे को बता देना सब 10 on 10 है बोल के, ठीक है। बाकी लाइक एंड सब बॉयज, ओजी के लिए खराब गया गेम, एक किल मिला, आरुजो मारा। बाकी अपना गॉर्डन 4 मैन जिंदा है, टैंक वाला एरिया होल्ड कर रही। प्लीज पप्पा लेफ्ट साइड जोन शिफ्ट मार दो, प्लीज प्लीज पप्पा प्लीज। और यार अपने टैंक वाला एरिया जोन में है नहीं रहा, जो अपन वो मिलिट्री वाला छोटा सा एरिया होल्ड करते वो जोन में है नहीं। अब अपनी पुश कहाँ डालेंगे अपन? फेरी के अंदर कंपाउंड में, फेरी के अंदर कंपाउंड में जाएंगे तो सीन तो होगा। अपन कहाँ जाएंगे भाई? पानी वाला एरिया पूरा लोग ले रहे हैं, पूरा ले लिया, एनजेक्स ले ली, 40 फेरी का 2 नीचे वाले सीमेंट वाले एरिया और स्क्वाडर्स होल्ड कर रही है। फेरी का बान हाउस ऑलरेडी टेकन है, फुल जो 2 कंपाउंड होते हैं फेरी के एकदम पास वाले वो भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। एफएल ब्रिज के पास है, इधर अप्रोच रखेंगे अपन, इधर अप्रोच रखेंगे। Slowly careening back in towards his team and lock it down. They have lost one off the back of that. Vehicles are smoking, flaming. Matches Dashwood going on. I mean, that's 3 eliminations potential there for them, but they're worried about these sidelines at the side. Furia. Ooh. Go on. आप लोगों को गॉडल की रोटेशन दिखाता हूँ, आ जाओ। Give it some welly. मैप स्ट्रीम देखो पब्लिक, गॉडल अभी भी है ना वहीं पे है और रोटेशन मारी नहीं, बट ऐसा मैं आप लोगों को चेंज करके दिखाते रहता हूँ क्योंकि अब मैं सीख गया है। ये कैम स्विच किया, ये मैप फीड दिखाया, कैम स्विच किया, ये सारी चीजें कर सकता हूँ। ये फुल कैम कर दिया, दूसरा कैम कर दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, सब कर सकता हूँ। टियानबा वर्सेस कोटी की, कोटी वर्सेस टियानबा, ये भी यहीं पे मसर कर रही है। गॉडल आ गई, फटफटी डब्ल्यू बॉस कमान 40 से बच के, नहीं मानिया उस साइड नहीं, मानिया उस साइड नहीं, बच गया, मानिया बच गया। डब्ल्यू में किल ले, आराम से। टियानबा के साथ अलग नहीं है, टियानबा ये के 2 बॉस से निकाल दिया, अच्छा जोन है। एक मार दिया, 2 Really good stuff. एक टियानबा का 2 ये to 1. What a play from Mormon. The speed, the velocity. Straight in there, no qualms. Now vitality. They're up into it. This place has been the graveyard of 5 separate teams so far. Vitality आ गई, Vitality finally just come up. Towards the dregs, the funeral's almost over. Can Salme stay alive as the sole participant? The vitality of Victor, I don't know how to do from it. the top floor. Or will they just be signing their death warrants on entry? Axel being shot in